previously we studied about different courses available in physical education after completing our schooling. Now we'll know about career options in physical education. So let's start with teaching career in physical education. Teaching career, अब teaching मतलब school, तो elementary school, middle school, high, senior secondary school, colleges and universities, यहाँ पे क्या और कितना career options है physical education के लिए. सो एलिमेंट्री स्कूल में क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, तो हमें छोटे बच्चों को शुरू से ही, इफ़ अ किड स्टार्ट्स फ्रॉम अ अर्ली एज, तो वो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है बड़े होते होते. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ फिजिकल एजुकेटर, a physical education teacher in elementary school, but physical education let's read it. Physical education is a must in elementary schools. Physical education plays a vital role in the all-round development of children. Through the programs of physical education, children become creative, develop self-image and grow in holistic manner. The emphasis can be placed on learning the various activities such as running, jumping, climbing, throwing, catching, kicking and striking. In India, there is no career opportunity for physical education at elementary school level, क्योंकि सारे समझते हैं क्या ज़रूरत है, सारे समझते हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं है इतने छोटे एज में. बट इन फॉरेन कंट्रीज स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड, स्टूडेंट को फोर्स किया जाता है, एक प्लेयर को फोर्स किया जाता है कि हाँ तुम्हें जाना पड़ेगा, उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, फिर जाके वो बड़े होके एक अच्छा परफॉर्मर, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन पाता है, एक हाई लेवल वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म कर पाता है. दिस इज़ द मेन ड्रॉबैक इन इंडिया. This is the reason that India lags behind and other advanced countries win laurels at world level. Government as well as society must lay stress on implementing physical education in primary schools. Now next comes the middle school. Now career opportunities in physical education teacher in middle school are ample, but only in the schools of big cities. सिर्फ बड़े शहरों के schools में, मिडिल स्कूल्स में एक स्पोर्ट्स टीचर अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में अपॉइंट नहीं करते. इन सच स्कूल देयर इज़ अ सेपरेट सिलेबस फॉर 6th, 7th and 8th classes. In government middle schools, there are rare opportunities of employment. Consequently, it can be said that in middle schools, the opportunities of jobs in physical education are not sufficient. Then comes high school. Specialized teachers for physical education are appointed in high schools, private or public. They are required to teach theory and practicals of physical education. They are also required to prepare various teams of sports for inter-school competitions. Then comes the senior secondary school. Senior secondary school में एक physical educator को क्यों employment दी जाती है? Firstly, as same in the high school की 11th-12th के बच्चों को फिज़िकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, थियोरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी. एंड सेकेंडली इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स फिज़िकल एजुकेटर्स मेनली हेल्प इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल एंड making various teams of different sports so that the school can compete in inter-school sports competitions. So, it is a common practice throughout the country to engage special teachers of physical education in senior secondary schools. Physical education is an optional subject in government and senior secondary public schools. These teachers are required to maintain discipline in schools. They also need to prepare various teams of sports for inter-school tournaments. There are ample opportunities for jobs in such schools. Next comes college and university. Now, फिज़िकल एजुकेशन इज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन कॉलेजेस. अगर 11th-12th का बच्चा फिज़िकल एजुकेशन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर से पढ़ रहा है और वो चाहता है कि वो आगे भी पढ़े, तो इट इज़ एन ऑल्सो ऑप्शनल सब्जेक्ट. देर आर वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज इन फिज़िकल एजुकेशन इन अ नंबर ऑफ कॉलेजेस. टू टीच एट यूनिवर्सिटी लेवल, PhD research work and publishing of books are also essential qualifications along with college level qualifications. At the college level, preparation of various teams of sports is also associated job, whereas at university level सिर्फ टीचिंग करनी होती है.
Now next comes teaching in non-school settings. Non-school settings मतलब sports clubs, youth and community organization, teaching centers, teaching in centers for elders, टीचिंग इन रिसोर्ट्स. अब ये जो नॉन स्कूल सेटिंग्स हैं ये इंडिया में अब तक एप्लीकेबल नहीं है. इंडिया में अब तक इन पर फोकस नहीं किया गया. अब तक ये इंडिया में आई नहीं है. इट इज़ टिल नाउ ओनली एप्लीकेबल in USA, UK, Germany, France, Japan and Russia. In India, fewer job opportunities are available in this field as compared to other countries. इन countries में बहुत सारे clubs हैं जहाँ पे people go and improve their performance. But in India, there are different clubs, sports clubs and organizations, but they don't work in that perfect manner as it works in the Western countries. Now comes coaching career in physical education. There are a number of job opportunities for coaching as in the field of teaching. Opportunities to coach exist in both the school and non-school settings. पहली बात, coach, when you are called a coach, when you qualify from a certified institution, we can say from National Institution of Sports. So when you qualify from there, you are called a coach of the game in which you have qualified for. So opportunities to coach exist in both the school and non-school settings. At school level, a coach may be required to teach physical education and also to coach a team. स्कूल लेवल पे क्या होगा, जो कोच होगा उसको एज अ फिज़िकल एजुकेशन टीचर भी रखते लेंगे और उसका जो पर्टिकुलर स्पोर्ट है उसकी टीम प्रिपेयर करने के लिए भी एम्प्लॉयमेंट उसे दे देंगे. इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, coaches may be appointed to coach various teams for inter-collegiate and inter-university competitions. Numerous job opportunities are also available in State Sports Department and Sports Authority of India. अब स्कूल नॉन स्कूल सेटिंग्स के साइड में हटा के जो स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होता है और जो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहाँ पे भी कोचेस को एम्प्लॉयमेंट मिलती है. क्यों? क्योंकि बच्चे हैं जो उनके अंडर रहते हैं. जैसे साई के अंडर बहुत बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, तो साई के अंदर कोचेस उस हाई लेवल के होते हैं, तो जिनसे वो ट्रेनिंग लेते हैं, तो देयर कोचेस आर रिक्वायर्ड. ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशंस एंड मैचेस, द कोच मस्ट मोटिवेट द प्लेयर्स to make their best efforts so that their maximum level of performance can be achieved. A coach should be able to give interviews, must be able to speak in front of groups, and must be aware of the current trends and latest rules of the games. अब कोच है तो कोच को तो सब पता ही होना चाहिए. उसे पता होना चाहिए कि कैसे उसे टीम को मोटिवेट करना है, कैसे प्रैक्टिस करवानी है, क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, क्या नई टेक्निक्स आई हैं, क्या एडवांस मॉडर्नाइजेशन हुआ है गेम में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट कम्स हेल्थ रिलेटेड करियर. हेल्थ रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हैव एक्सपैंडेड इन रिसेंट ईयर्स. कुछ सालों में, अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स में लोगों का अपने हेल्थ के टुवर्ड्स बहुत कॉन्शियस हो गए हैं लोग. सो दे आर सर्चिंग फॉर, दे आर हायरिंग nutritionists, their personal nutritionists, personal health care, they are contacting to healthcare organizations. So there a physical educator can work because he or she knows that how to consume nutritions and how to make ourselves healthy, not only by eating but also by performing various activities. So the number of health and weight control clubs have increased rapidly. पर जो mostly health और weight control clubs जो खुले हैं, mostly their concentration is only on collecting money from the public rather than trying to provide good services. But there are a number of health and weight control clubs which are reputed and have excellent performances and programs. The activities and services provided in these clubs may vary, but fitness activities remain the same. अब health related career है तो बात सिर्फ fitness और nutrition की होगी. Instructions regarding diet and nutrition are also given to the clients. Another field of career is
athletic training under health related careers. But in India, such careers are available only at national level. Generally, athletic trainers work with national teams of games and sports. Her prime responsibility is related to prevention of sports injuries and rehabilitation of injured athletes. एथलीट्स को, स्पोर्ट्स पर्सनस को बताना कि आप इंजरी से कैसे बच सकते हो, और उनकी अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसे कैसे उसे रिकवरी होगी, ये बताना काम होता है एक एथलेटिक ट्रेनिंग करियर में. So, in conclusion, it can be said that job opportunities for physical educators are widely available in health and weight control clubs, slimming centers and fitness clubs, but career in athletic training, especially in India, are limited. Now next comes administration related careers. एक डिग्री, फिज़िकल एजुकेशन की डिग्री लेके आप सिर्फ टीचिंग या कोचिंग ही नहीं, आप आगे के जो हम पढ़ेंगे उनमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं. सो इन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स, फर्स्ट कम्स डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. द एडमिनिस्ट्रेशन लाइज इन द हेड्स ऑफ चेयरमैन, in the hands of chairman or head. She is the sole administrator of the teaching department. Teachers of physical education and other clerical staff work under the head or chairperson. In India, there is no need for separate management qualifications for such a post because it is typically based on seniority. जितना सीनियर बंदा होगा, जितना सीनियर होगा इंसान पोस्ट अपनी करियर में, उतनी ही हाई उसे पोस्ट मिलती रहेगी, बिकॉज दीज डिपार्टमेंट्स आर अंडर गवर्नमेंट. नेक्स्ट कम्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल for the administration of various sports programs. These posts may be found at district level for schools competition, organizing different competitions, चाहे district level पे हो चाहे state पे हो. His or job are fixing dates for competition, arranging officials, planning for transportation, lodging and boarding. She is only responsible for preparing sports budget. Next comes industrial recreation. Now, many multinational companies and national companies are providing recreational and sports opportunities for their employees. These responsibilities include establishing a program of activities, setting up team schedule of competitions, and supervising the program related to fitness of employees. The director of industrial recreation is designated in such companies. बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो एक फ़िज़िकल एजुकेटर को हायर करती हैं अपने खुद के एम्प्लॉयज़ को फ़िट रखने के लिए, और अगर आप वहाँ अगर आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, सो देन यू आर designated at the post called the Director of Industrial Recreation. Next comes sports facilities management. The requirement of these facilities is more in Western countries in comparison to India. The sports facility manager may perform all responsibilities himself or herself, or may have assistants or several staff members, volunteers under his or her direction. She should be sure that facility and equipment are maintained according to the accepted standards. अगर कोच है, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स करके निकल रहा है, तो उसे पता होता है कि कौन सा परफेक्ट इक्विपमेंट है, क्या प्रॉब्लम है जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, तो ही कैन हेल्प to increase the performance by giving a proper and perfect equipments and area. Next comes performance related careers. Now, as a player, how you can make your career? As a player, sports person who are most successful in competitions usually seek a sports career. Many sports scholarships for good sport persons are available in India at various levels. In India में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स करियर हम देख सकते हैं are available in cricket, lawn tennis and marathon race. Many jobs are also available for skilled sports persons in government and private sector, such as in defense services, banks, companies or industrial corporation.
अगर आप प्लेयर हो और एक हाई लेवल पे परफॉर्म कर चुके हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारी जॉब्स मिलती है. आप डिफेंस सर्विसेज में अप्लाई कर सकते हो, बैंक्स, कंपनीज और इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस, रेलवेज एंड मैनी मोर. The sports persons who want to pursue professional careers in sports may fail to get professional ranks or have to leave the professional arena after a few years. Now, as officials, generally, it is a career of approximately 10 years. 10 साल का career है as an official. After the sports person may pursue the career as officials because they know the ins and outs of a game. Now, as officials हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जैसे क्रिकेट में हम बोल सकते हैं बहुत सारे बड़े बड़े रिनाउंड क्रिकेटर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं. नाउ दे हैव बिकम अ कमेंटेटर. कमेंट्री करते हैं वो. सो दैट इज़ द अदर जॉब that you are in the same field, in the same sport which you are interested, but you can't do that same job. You are now an official, and then you have to, if you want to have a career in that sport, then it will be approximately 10 years that you can pursue it. क्योंकि 10 साल के बाद 10 साल के अंदर अंदर ही बहुत ऐसे प्लेयर्स हो जाते हैं जो सीनियर हो जाएंगे, जो रिटायरमेंट लेंगे, एंड देन दे विल हैंडल दैट पोस्ट. There are various officials in a tournament such as a referee, umpire, timekeeper, recorder, scorer, etc. Many former sports persons turn to officiating as a full-time professional career after sports career. Officiating can be challenging career, but in India it is still in budding stage or less number of competitions. क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत कम कॉम्पिटिशन्स होते हैं, साल में एक बार, 2 बार या 3 बार. बट इन वेस्टर्न कंट्रीज देर आर रेगुलर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एट डिफरेंट लेवल्स. नाउ नेक्स्ट कम्स करियर इन कम्युनिकेशन मीडिया. अब कम्युनिकेशन मीडिया में एक स्पोर्ट्स एजुकेशन का बच्चा या फिर एक स्पोर्ट्स एजुकेशन क्वालिफाइड स्टूडेंट, हाउ ही और शी कैन अप्लाई. इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन राइटिंग, यू कैन गो फॉर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म. The sports journalist may get opportunities to work with newspaper and in sports magazines because the space of coverage of sports news as well as the number of newspapers and sports magazine is increasing rapidly as people are getting attracted towards sports more and more. So newspaper में भी sports का column होता है और magazine एक particular sports magazine भी छपती है. तो if you have a good sense of writing and if you are interested in writing, you can go for sports journalism. No doubt, career opportunities in sports journalism are ample, but this field requires keen interest, taste, and talent in writing. Next come book writing. This career is applicable only to those physical educators who have deep knowledge of various sub-disciplines of physical education. अब book writing कोई particular sport पे हो सकती है या कोई particular sport के topic पे हो सकती है. So you can write it when you have a deep knowledge, and deep knowledge उसी के पास होती है जो उसने practically वो sport perform किया हो. And the thing is same, you must have an interest in writing. So considering this as a part-time career. Next comes book publishing. These jobs require a knowledge of physical education and comparative values of the available books. These persons should have sales ability and an understanding of the available markets for publication in the field of physical education and sports. Then comes sports broadcasting. अब sports broadcasting क्यों एक करियर हम बोल सकते हैं? क्योंकि आजकल लोगों का इंटरेस्ट बढ़ चुका है. द सेम थिंग, people want to know about sports. People watch television, they listen on radios and other broadcasting media. So the broadcasting of sports event, also known as a sportscast, is the live coverage of sports as a television program, on radio and other broadcasting media. She must be able to speak well and not be inhibited in speaking into the microphone or in front of camera. वही बात है, आप स्पोर्ट्स में तो हो ही, आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में तो है, यू आर अ फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट, बट इफ़ यू वांट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, बुक राइटिंग, बुक पब्लिशिंग, यू मस्ट हैव अ सेंस ऑफ गुड राइटिंग एंड द अवेलेबल बुक्स. स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ आप कैमरे के आगे माइक पे बोल सको. सो यू कैन क्रिएट अ गुड करियर इन स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग. देन कम्स मार्केटिंग.
Job opportunities in marketing and selling sports equipment have increased and are challenging. A consumer always expects the salespersons to be an expert on all types of sports equipment. अब कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ख़रीदने जाता है शॉप पे या कोई शोरूम में स्पोर्ट्स के, तो वो उसके दिमाग में यही होता है कि जो बंदा है, जो एम्प्लॉयड है, उसको फुल नॉलेज है उसके बारे में, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में, तो उसे सही प्रोडक्ट मिल जाएगा. नाउ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. One may establish a sports interest industry at a small scale. Ab sports industry we can say like we have Shiv Naresh in India. It started from a small scale, but now it has become a huge sports brand for India. So only one may establish a sports industry at a small scale. It may be related to only t-shirts and tracksuits. It may be related to only sportswear too. The knowledge of research and designing is also vital for such jobs, क्योंकि कोई भी कैसे भी कुछ भी बना देगा, ही उसके पास नॉलेज नहीं है, ही डोंट नो हाउ टू मेक, व्हाट टू मेक, विच मटेरियल इज़ सूटेबल फॉर द परफॉर्मेंस और व्हाट. सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, यू नो व्हाट द स्पोर्ट इज़ ऑल अबाउट, यू कैन मेक अ more good and more perfect equipments and wares for the sports persons rather than an unknown person, an unexperienced person can make. So it may be the knowledge of research and designing is also vital for such jobs, because new types of sports equipments and new types of tracksuits or swimsuits which are beneficial for increasing the performance are always in demand.